Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new topic in your grammar, that is your object and complement, transitive and intransitive verb. We have already learned about verb. हमने पिछले सेशन में क्या किया है, verb हमने पढ़ा है, हमें पता है verb क्या है. What is verb? A verb is a action word, right? Whenever we perform an action, it is said to be verb. Few examples of verb are playing, walking, writing, speaking, learning, doing. All this is your verb. Now in this session we will learn about the object and complement as well as transitive and intransitive verb. So first we will understand what is object and complement. The one is the object. What is the object? We already know that the subject in a sentence is the doer of the action. Word that receives the action done by the subject is called the object. क्या कहता है ये? हमें पता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, जो वो एक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. लेकिन जो एक्शन जिससे वो जो एक्शन रिसीव होता है जिसके थ्रू, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, the children were playing. If I say the children were playing, so here what is happening? मेरे पास सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन मेरा सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है. टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट, टू मेक माई सेंटेंस कंप्लीट, आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फ्यू वर्ड्स. सो द वर्ड सेंटेंस विल बी लाइक दिस: द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल. सो व्हाट इट इज सेइंग? वो क्या कर रहे हैं? ये मेरा सब्जेक्ट है एंड ये क्या है? एक्शन है. नाउ दिस एक्शन इज रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फुटबॉल. ये फुटबॉल कौन प्ले कर रहा है? चिल्ड्रेन. एंड चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं. ओके, सो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. सो इन दिस व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर नोइंग द ऑब्जेक्ट. हाउ? What? Because the action which is received done by the subject is your object. The woman has informed the police. Now woman ने क्या किया है? इन्फॉर्म किया है. किसे किया है? पुलिस को. तो जो अनदर पर्सन है जहाँ से रिसीव हुआ है एक्शन, इज योर ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? What is your object? The action which is received done by the subject is your object. For example, if I say the boy is writing a letter. So the boy is writing. What he is writing? He is writing a letter. So a letter will be your object. And what will be your subject? The boy. And what will be your verb? Writing. Understood? In this way you will identify your subject, verb and object. Understood? Now the second concept in the same, that is direct and indirect object. अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, राइट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ से वो एक्शन रिसीव होता है विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ इफ आई से, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, द बॉय इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर. सो what is it is happening? क्या हो रहा है इसमें? कि यहाँ पे लेटर तो लिखा जा रहा है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट, राइट. लेटर वो ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके लिए लिख रहा है? टू अर मदर. सो द लेटर विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज ही इज राइटिंग अ लेटर. एंड किसके लिए लिख रहा है? वो मदर के लिए. सो मदर विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस a definition, the explanation part in that book. In some sentence, verbs may have two objects. The first is the indirect object, the second is the direct object. The direct object answers the question whom or what after the verb. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है whom or what. And the indirect object answers the question to whom or for whom, मतलब किसके लिए और क्यों. Okay. Now example, the salesman sold. अभी salesman क्या है? सब्जेक्ट है, राइट. sold उसका एक्शन क्या है? sold, selling. Now what he is selling? He is selling a jar of jam.
सो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, बिकॉज इट इज प्रिसीडिंग विथ माई वर्ब. What the salesman is doing? The sales assistant is selling the jar of jam. And to whom? यहाँ पे क्या है देखो, to whom. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या ऑप्शन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, to whom या फिर for whom जो आंसर आता है उसका हमको, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद दैट हेल्प दैट इट इज़ एन इनडायरेक्ट. टू whom it is selling, to whom he is selling, वो किसे सेल कर रहा है, us. So us will be your indirect object. Understood? Now let's take the another example. You must tell your mother the complete truth. Now you is the subject, must tell is your verb. Why? Because it is the helping verb and this is your telling, ठीक है, action of speaking something. So this is your verb. And to who must tell, किसे कहना चाहिए, your mother. And what? The complete truth. So that in this way you will identify your subject, your verb, indirect object and direct object. Now let's go to the third part of the same chapter, that is the complement. अब complement क्या है? The complement is the word or expression used after a word to complete the sentence is known as the complement. जो word हम अपने sentence को complete करने के लिए बोलते हैं, जिसमें हमारे subject के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट. शीला बिकेम अ नर्स. शीला क्या हो गई, शीला नर्स हो गई. अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, नाउन है, बिकॉज नर्स क्या है, वो नाउन है ना. कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बट ओनली द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड आइडेंटिफाइंग दिस, दैट इज योर it makes your sentence complete. It gives some expression or meaning to your sentence. This purse is hers. अभी यहाँ पे मेरे sentence को क्या है, मीनिंग दे रहा है. ये पर्स किसका है, hers, उसका है. So her is your complement and it is the pronoun. Ritesh was angry. So angry मतलब गुस्सा, and it is what? It is showing some expression. So that is your adjective. So it is the type of, which type of complement it is? It is adjective. Understood? In this way student, you will figure out the subject verb complement and you will identify the types of complement. We have already studied na in your parts of speech, noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction. So what you have to do, you have to identify from the complement that which type of complement it is. Okay, now we will proceed with another topic in the same section, that is your transitive and intransitive verb. अभी transitive और intransitive verb होता क्या है, what it is and what is the meaning and how you will identify that it is an intransitive verb or a transitive verb. See, we will understand this concept with the help of this explanation as well as the definition. Transitive and intransitive verb. Transitive verbs need an object to complete their meaning. What it says, क्या कहता है कि जो verb हमारे object की help लेता है हमारे sentence को meaning देने के लिए, that is your transitive verbs. Now for example, Sarayu क्लीन्स द रूम. अभी यहाँ पे क्या है, हमारे सेंटेंस को क्या है, मीनिंग मिल रहा है. यहाँ पे बिना क्लीन्स ये वर्ड के हम ये दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है एंड टू रिलेट दिस ऑब्जेक्ट वी हैव टू टेक दिस हेल्प, दैट इज क्लीन्स. एक्शन में यहाँ पे क्या है, दैट इज योर, yes, that is your transitive verb because it needs an object to complete their meaning. अगर हमने ये object नहीं, the room नहीं लिखा होता तो हमारे meaning को, हमारे ये जो verb को क्या है, complete meaning नहीं मिलता. So whenever we need an object to complete its meaning, that is your transitive verb. जब भी हमारा verb जो है वो incomplete है और हमने object का help लिया है to complete my sentence, to give the meaning to my sentence, it is said to be your transitive verb. Now let's take another example. Shabina brought some wooden bangles from Meerut. So यहाँ पे क्या हो रहा है, सबीना ने बाय किया है. क्या बाय किया है,
सबीना ने क्या लाया है, ब्रॉड, उसने लाया है, क्या लाया है, वुडन बैंगल्स लाया है. So indirectly she is taking the help of this object, wooden bangles. So this is your, so the verb which is used is your transitive verb. Okay, जब तक हम ये वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, जब तक हम ये ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं लेते हैं, हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहता है. लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल. अमृता गेव मी अ कप ऑफ आइसक्रीम. सो यहाँ पे अमृता इज द सब्जेक्ट. नाउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी बिकॉज शी इज गिविंग टू होम, शी इज गिविंग टू मी. एंड व्हाट शी इज गिविंग अ कप ऑफ आइसक्रीम. सो यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट है. ओके, विदाउट दिस टू ऑब्जेक्ट दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. दैट इज वाई दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स गो विद द इंट्रांजिटिव. अभी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ड इज टोटली अपोजिट ऑफ another, like intransitive verbs do not need an object or any other element to complete. So here you can see the example. यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, नमिता लाफ्ड, अभी उसने लाफ किया है. ओके, सो यहाँ पे फॉर लाफिंग शी डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लाफ करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. So this is your intransitive verb. Basically the action word which is done by the doer or the subject is your intransitive verb, where you doesn't take the help of any of the object to do your action, to do your work, to perform your work. Okay, so Namita laughed, all of us walked fast, the snow is falling. Some intransitive verbs take subject complement to complete their मीनिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो हेल्प लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट का नहीं, कॉम्प्लीमेंट का. सो इन दैट इज़ द डिफरेंट केस. इन सिंपल वर्ड्स इफ़ आई से, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ, अगर हमें फाइंड करना है कि ये मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि आपके इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट रहेगा. ओके, और आपके ट्रांजिटिव वर्ब में आपके वर्ब के बाद, आपके सेंटेंस के वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ विद द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड लाइक टू गिव 2 more examples so that you could clear your concept. See, he opened the door. The door opened. तो यहाँ पे देखो, ही सब्जेक्ट है, उसने क्या किया, ओपन किया है. क्या ओपन किया है, डोर. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का हेल्प लिया जा रहा है. सेकेंड वन, द डोर ओपन. तो यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर नहीं है, सिर्फ क्या है, डोर ओपन हुआ है. सो दिस इज़ योर इंट्रांजिटिव वर्ब. दे हैव फिनिश्ड द गेम. सो यहाँ पे डूअर भी है और ऑब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है. सो दिस इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब. द गेम हैज़ फिनिश्ड. सो यहाँ पे क्या है, मेरा डूअर नहीं है, सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि गेम फिनिश हो गया है. सो इन दिस वे यू विल फिगर आउट द ट्रांजिटिव वर्ब एंड द इंट्रांजिटिव वर्ब. I hope students you have understood this concept about object, complement, indirect object, direct object, what is transitive verb and what is intransitive verb. Revise this chapter by watching this video and do your exercise from your workbook. Have a nice day students. Bye bye.